closed until further notice. The DMRC has said no interchange facility will be available at the station during the closure and has apologized for the inconvenience caused to commuters. With this latest closure, the total number of metro stations shut across Delhi now has risen to 18 as security arrangements continue to be tightened in several parts of the city. Further updates are awaited. Atul Ranjan is with us live on this story. Atul, New Delhi metro station now has been closed until further notice? Well, yes, the DMRC earlier announced that New Delhi metro station would also be among the list of those metro stations which have been shut down by the DMRC. Now, earlier as well, 17 metro stations were shut down by the DMRC, and this is happening, right since day before yesterday, when the first time we saw a DMRC formally, making an announcement that certain stations would be out of reach for passengers, mostly for entry and exit, while the interchange facility would be on. But today, DMRC has announced that the New Delhi metro station, which is a very crucial, metro station, given the fact that Airport Express line interchange is also available there, that has been shut. And crucially, the DMRC also says that interchange facility as well won't be available at the New Delhi metro station. So it is quite concerning, given the fact that people who must be underway on their way. अरे मीटिंग जो है वो नीचे है, थोड़ा ये पीछे रखना है। सर, मीटिंग में क्या तय होगा, क्या चर्चा हुई? आज हमें सरकार ने सेकेंड राउंड ऑफ क्राउड मीटिंग बुलाया। हम लोगों की ये मांग थी कि मीटिंग हुआ था, टाइम पे 4 घंटे लग गए का वार्तालाप करने के लिए। लेकिन इस बार कोई या जंतर मंतर हमारी बातों को आज हमें याद उनके साथ मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे डिमांड का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें सॉवरेन गारंटी प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं लगेगा। सरकार क्या गया है, ये बोला गया। क्या कर रहा है भाई? नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार क्या है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे NTA कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उसको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसपे सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और साथ हमने एक और चीज रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है। हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो,
ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो, धक्का मत मारो। सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है। साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को, अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। All right, so there you have it. Of course, that meeting has concluded between Cockroach Janata Party representatives and the union government. CJP representatives are briefing the media there. Ashutosh Ranka and Saurav Das were speaking with the media after that meeting concluded. They have indicated there will be another meeting tomorrow in the afternoon as well between the government and the CJP. The CJP representatives have said the union government has accepted their request for compensation, adequate compensation to be given to families of the victims of the NEET tragedy, and they have said the government has asked for time to consider the demand of the union education minister's resignation. They've said once again the meeting will take place tomorrow between CJP representatives and the union government. Let me bring in Atul Ranjan for more details on this story. Atul. Okay, Sanjay Sharma is with us live as well now. Sanjay, the meeting has ended between government and CJP. What has transpired? Sanjay, can you hear me? I think we're having some connection issues there with our reporter. Let me quickly draw back Atul Ranjan if we can. Atul, clearly, of course, the meeting has now concluded. A press briefing by the CJP representatives telling the media what transpired. Give us the main takeaways of today's meeting. Well, quite a long meeting. In fact, for about 1.5 hour long meeting, this happened between the Dharmendra Pradhan and, beg your pardon, JP Nadda and, Jiten Singh as well as the CJP spokesperson. Now, what it appears after hearing CJP spokesperson Saurav Das is that, clearly government in some way
is probably willing to consider the demand of a resignation of Dharmendra Pradhan. That is what we can understand from this, because initially in the very first meeting when it happened, government straight away on their face they told this is unacceptable, this is not happening. But this time around, according to Saurabh Das, government asking for some time of next midday, because that is when another round of meeting has been scheduled. That is something, it is a positive, I would say, that the CJP would take away from this meeting, because the government for the very first time, asking, at least showing some, positive indication that, okay, it would consider probably, or let me, have some more time for discussion. So clearly, that is something which the CJP would claim as a victory or as a positive sign out of this meeting. Now, obviously, the CJP spokesperson also submitting another affidavit to the JP Nadda and Jitendra Singh as well this time around, reiterating their three core demands. And while the Saurabh Das has once again, confirmed what Sonam Wangchuk as well as the central government has confirmed initially as well, that they have agreed on the two demands. Number one, giving compensation to the families who have lost their kid because of the need retest distress. Number two, not getting forward any actions and investigations in the FIRs that have been lodged against protesting students over July 20th March. So that has been reiterated by the government. Again, the Saurabh Das and CJP acknowledging the same. But the third, then the main sticking point, which was the core of the agenda today, which for which everybody's eyes was on this meeting, there seems to be some sort of headway that the CJP is making, some sort of gains for them, given the fact that the government has asked for more time. It is buying time, to maybe have rethought about it, maybe have a word with the higher leadership in the party and in the government. So certainly some positive sign and something which the CJP would claim as their, victory or something of a positive takeaway out of this meeting. Certainly.